Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू, धन्यवाद आपका। शुरुआत हेडलाइंस राजेश से। Prime Minister Narendra Modi hails whopping 355 crore UPI transactions this August, says it's a matter of pride. Bank will have to play a pivotal role in achieving India's export target of $2 trillion by 2030, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Foreign investors pump in nearly 22,000 crore rupees in the Indian capital market so far in September. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अगस्त में 355 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन को गौरव का विषय बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत से 2030 तक 2000 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में बैंकों की अहम भूमिका होगी और विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। Prime Minister Narendra Modi today said the nation should take the resolve of economic cleanliness. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on All India Radio, the Prime Minister said economic cleanliness ensures rights of the poor and eases their life. He said due to the Jan Dhan scheme, rightful money of the poor is getting credited directly into their accounts and corruption has significantly reduced. The Prime Minister expressed delight that even in villages, the common person is now capable of doing digital transactions through FinTech UPI. He said it is a matter of pride that 355 crore UPI transactions took place in the month of August this year. He added that today, on an average, digital payments of more than 2 lakh crore rupees are taking place through UPI. He said the economy of the country is thereby acquiring cleanliness and transparency, and now everyone knows the importance of FinTech. The Prime Minister expressed satisfaction that as the nation is celebrating the Amrit Mahotsav of independence, the young generation is giving Khadi the place of pride that it had during the freedom struggle. Production of Khadi and handloom has increased multiple times as well as its demand. ये पहले कॉलर हैं भिलाई से रवि। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में जी, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का कोई ऐसा कोई प्रिंसिपल या कुछ होता है कि हमारे जुडिशियस लिस्टिंग होती है या उसमें कोई ऐसा कोई गाइडेंस मिले जिसमें कि हम कब करना चाहिए और कब, जैसे अभी 60,000 है मार्केट, एक बार मैंने अभी बीच में मार्केट बढ़ा था तो एक बार प्रॉफिट बुक किया था,
अभी फिर से बहुत बढ़ा हुआ है, तो मुझे शुड आई अगेन बुक प्रॉफिट और आई शुड रिमेन इन्वेस्टेड? गिरावट से फायदा उठाना और SIP जो आप कर रहे हैं उसमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया जा सकता है जिससे कि आप फायदा उठा सकते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों का जो आकलन था कि बाजार बहुत बड़ा हुआ है, हम पैसा निकाल लेते हैं, वो सब गलत साबित हुआ है। कुछ समय के लिए अगर बाजार गिरा भी है, हाँ, जरूरी ये है कि ये जो पैसा आपका लगा हुआ है इसकी जरूरत आपको कई सालों तक नहीं पड़े। हेलो, Yes, we can hear you. हाँ, जरूरी ये है। I think we've lost touch with Dhiren. You have a story on the export target that जी the finance minister is talking about. अगली खबर पे नजर डालते हैं। तब तक केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय किया है और बैंक इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में भारतीय बैंकिंग संगठन की 74वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए इस लक्ष्य का उल्लेख किया, जिसमें 1000 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात और 1000 अरब डॉलर का सेवा निर्यात शामिल है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बैंकों के क्रियाकलाप में तेजी और विभिन्न व्यापारों के साथ उनकी बेहतर समझ से ही हासिल हो सकता है। वित्त मंत्री ने बैंकिंग में नई तकनीक अपनाने पर बल देते हुए कहा कि भविष्य में भारतीय बैंकिंग डिजिटल प्रक्रिया से चलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया पर यूपीआई का बेहतर प्रभाव पड़ा है और बहुत सारे देशों में भारतीय रुपया स्वीकार किया जा रहा है। Dhiren, can you hear us now? जी, I can hear you well. Okay. So we were talking about how an investor needs to. I'll just try and answer the remaining part of the question. That he's fearing correction. He is fearing that the market will come down. He's doing his SIP, and is there a way that he can protect his profit, which has been, which is there so far? I think it's important that if it is, you should make sure that if you have invested money in equity or you are doing your SIP of the kind, the money which you are unlikely to need for a couple of years. That's one. The other is that accept the fact that there will be correction. But if you are investing in, if you are investing in a good fund, it will make a comeback, and it is very difficult to expect that it is very, very difficult to anticipate the correction. And as you would have seen that, March 2020, we saw the correction and then the market made a comeback where everybody was caught by surprise. Nobody can get it right. And so you just have, carry on with your SIP. Make sure that, you don't need the money. Maybe the money which you need in maybe 2-3 years time, and you think it has, if you are doing your SIP with a particular objective and the money has grown to a point that you can achieve that objective, by all means take that money out. Otherwise, if it is a general investment for the long term, don't take it out. Don't try to perfect the timing. You will go wrong, and you'll miss a big opportunity. As we have seen that, we have seen the biggest move of the market when it was least expected. Okay. We have Rajendra with us from Mumbai. We welcome you to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening. Sir, आजकल nowadays there are too many online apps like Grow apps. Can I उसको consider कर सकते हैं कि जो online apps दिखाते हैं investment के SIP के, जी, तो क्या उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं वो थर्ड पार्टी कौन है जिसके माध्यम से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो जो ऑनलाइन लाइक ग्रो ऐप जैसे और बहुत सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं या बैंक के थ्रू ही हम SIP करें म्यूचुअल फंड में? नहीं, आप बिल्कुल बहुत आराम से आप उस पर भरोसा सकते हैं, उसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं और आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका पैसा लगा है कि नहीं। अभी परसों ही बल्कि पिछले सप्ताह ही एक नया एप्लीकेशन MF सेंट्रल, जो कि म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड के जो रजिस्ट्रार्स हैं कार्वी और कैम्प, उनके जरिए ये इसकी शुरुआत हुई है।
जब आप पैसा लगाते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं कि आपका पैसा, क्योंकि आप जब पैसा ग्रो के जरिए लगाएं, ईटी मनी के जरिए लगाएं, पेटीएम मनी के जरिए लगाएं, या जीरोढाई, या बहुत सारे ऐप अभी उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप लगाए, तो वो पैसा उनके पास रहता नहीं है और ना ही वो अपने पास पैसा रख सकते हैं। अगर वो पैसा अगर इन्वेस्ट नहीं होता है तो शाम तक वो पैसा उन्हें वापस करना अनिवार्य है। इसलिए जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में आप निश्चिंत रहें। इसके लिए आपको, और इसको आप MF सेंट्रल पे अपने फोन नंबर और पैन कार्ड के जरिए आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो पैसा आपका लगा है कि नहीं, और उसका आप स्टेटस और की जानकारी दे सकते हैं। Okay, Dhirendra, how to protect your returns in the times that we are in, and how do we make the most of the present times? If you have remained invested, I think you are making the most out of the present times, because the market is at such a level, and it is there in a very unexpected manner. Nobody expected the market to achieve this scale and sustain it. If you are getting fearful, then it's a different thing altogether. That was our first question, that people are getting worried that the market may not retain its level, and that is what I was saying, that make sure that it's your long-term money. If you don't have to worry. Markets will correct in between. Very difficult to perfectly time it. Maybe the money which you need in cover, if it was being done for a goal, maybe, and it has been achieved, take your money out. Okay. अगले कॉलर हमारे साथ हैं कोलकाता से शुभम। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, Entire Market Massage team. I'm a regular listener of your channel, and I appreciate all of your endeavor. So my question, let me put it forward in a very brief manner. So a few days back, there is a publication in the newspaper about the cryptocurrency. Like there is a special app has been launched about the cryptocurrency. So do you suggest is it safe to, download the app and to invest in cryptocurrency like Bitcoin and all? It was not approved by Government of India so far. But since it is publicly advertised in the newspaper that you can download an app on cryptocurrency, do you suggest is it a safe option as an alternative option of investment? Because something is being advertised in the public domain in a newspaper does not necessarily make it credible or legitimate, or cryptocurrency remains. There are still countries. In China, one by one, it is getting banned for variety of reasons. China is a country where whether most of the crypto currency was also being mined. In India, it definitely has not gained that the approval of the government, so to say. But one has to really ask. One should understand what you are getting into. Cryptocurrency, I think, the technology behind cryptocurrency, the encryption mechanism is definitely a very credible thing. It might be very useful. But Bitcoin or any other cryptocurrency, what is the underlying? It actually defies the whole logic, and it has turned out to be extremely volatile. It has become a very speculative vehicle. So if you are looking at a speculative vehicle, I think it's a banned vehicle. But then don't look at anything else but, as a vehicle where you're speculating on the direction of the cryptocurrency. The underlying bit of it, the logical part of it, whenever you're buying gold or silver or, any precious metal or stock or bond or, real estate, we know that it's a commodity or it's an asset play. Or, you're buying something which has some economic value embedded to it. This is something which has so far been, a lot of stories and hugely speculative and not much of a basis of the underlying asset. Okay, we are taking calls live from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. Dhirendra Kumar, mutual fund expert, is with us. Joining us now is Satish from Delhi. Satish, we welcome you. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र जी से पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र जी, जो कंट्री
क्रिप्टो करेंसी को ना माइनिंग कर सकती है, जो इसको जनरेट कर सकती है वो तो इसको लीगल बताती है कि भाई लीगल टेंडर है, लेकिन जो कंट्रियां जो इसको माइनिंग नहीं कर सकती, जो इसको जनरेट करने में अनेबल है, वो इसको इलीगल क्यों बताती है? वो इसको ये बताइएगा जी, उसकी नजर में ये एक फ्रॉड। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई ना तो जानकारी है, और ये अपने आप में एक ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म हो गया, ये एक स्पेकुलेटिव व्हीकल बन गया है। मुझे तो केवल मैं इस बारे में बहुत ही कम जानकारी रखता हूँ कि क्यों इसमें स्पेकुलेशन इतना बड़ा है, क्यों इसमें लोग इतना विश्वास करते हैं और ये अचानक बहुत 10-15% एक दिन में बढ़ जाता है या गिर जाता है। लोग इसको क्यों इलीगल कहते हैं या लीगल कहते हैं, और भारत में इसको मान्यता क्यों नहीं है? मुझे तो केवल बहुत सिंपल चीज है जिसमें कि आप कोई चीज खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या सोना चांदी भी खरीदते हैं, तो आप कुछ अंडरलाइन चीज होता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या है ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। मैं इस बारे में बड़ी कम जानकारी रखता हूँ और इस वजह से मेरा भी विश्वास इसमें बिल्कुल नहीं है। मुंबई से श्रीकांत हमारे साथ हैं। श्रीकांत, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। श्रीकांत, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, सवाल पूछें जी। मुझे 2 बजे तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट 3:40 तक चालू रहता है, तो अपना प्राइस कितना इन्वेस्टमेंट का वो समझ में नहीं आता है। जी, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर 2 बजे का कट ऑफ टाइम है और बाजार तो 3-3:30 बजे तक खुला रहता है। लेकिन इतने बारीकी से लेकिन बाजार का डायरेक्शन क्या है ये ब्रॉडली तब तक पता चल जाता है। और ऐसे भी जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ओपन एंड फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कई बार 1-2% तो एग्जिट लोड है। कम समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड में यानी कि ट्रेडिंग के लिए आपको निवेश नहीं करना चाहिए लंबे समय के लिए। और ऊपर से अगर कम समय के लिए लगाते हैं तो एग्जिट लोड लगता है, ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लगता है और पैसा निकालने पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है। तो आपको देखना चाहिए कि आप कम से कम लंबे समय का पैसा लगाएं और एक खास अवधि के लिए लगाएं, जिसमें कि आज बाजार 2 बजे तक पैसा लगाने में और 3:30 बजे जानकारी लेने के बाद पैसा लगाने में कितना अंतर होगा, इससे कुछ आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इतनी बारीकी से कोई चीज देखना है तो शेयर में पैसा लगाना उतना ही आसान है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से RS दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। माय क्वेश्चन टू धीरेन्द्र जी इज that which investment is better? Is it in Axis Blue Chip Fund or in a good performing index fund? So far, Axis Blue Chip, if you look at, a full cycle return, when I'm referring to full cycle, I'm talking of a phase of the market when the market was going down, the phase of the market when it was going up. And when you look at the return, I think, it is self-evident which has a stronger case. लगता है संपर्क टूट गया है हमारा धीरेन्द्र जी से, और हम अगली खबर पर नजर डालते हैं जब तक हमारा संपर्क होता है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 13,536 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह 1 से 24 सितंबर के बीच भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 21,875 करोड़ रुपए का रहा। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। क्या धीरेन्द्र जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ अभी। जी हाँ, राजेश कुछ सवाल पूछ रहे थे। Dhiren, I just want to I'll ask this question after we have spoken to Nitin from Mumbai. Nitin, we extend a warm welcome to you. Please go ahead and ask your question. Thank you, sir. अच्छा, मुझे बस ये पूछना था, ये जो FNO होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जी, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हो क्या? हाँ, इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये
ये जितने भी बाजार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसका कि अंडरलाइन आप ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि भविष्य में इनका दाम क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद रहे हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें भविष्य में किसी शेयर का दाम क्या होगा और उसकी बोली लगाई जाती है, उसके खरीदार और बेचने वाले लोग हैं। तो और ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप काफी कम पैसा लगा करके एक बड़ी रकम पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डेरिवेटिव है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक सर्टेन टाइम पे एक्सपायर होते हैं। तो उस समय जो अंडरलाइन, जो अगर आप किसी शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले रहे हैं या तो जब ये एक्सपायर करता है हर महीने, तो उस समय आपको रिन्यूअल के समय या तो उसका डिफरेंस देना होता है या फिर उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको कुछ और प्रीमियम देना पड़ता है। तो इन चीजों को बारीकी से समझिए। ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है अगर आप इसकी जानकारी रखे बिना, समझे बिना अगर आप इसमें जाते हैं। इसमें फायदा भी बहुत ज्यादा होता है और नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। Okay, Dhirendra, the question that I was wanting to ask you was that if an investor, after due diligence related to the risk-taking ability and have several years on their hands before they would need the money, do they have a reason in the stock market to be fearful when the benchmarks are at record peaks? Not really. You know, if you still have 5 years in your hand, I don't think you should worry about it. There are reasons, you know, there are times when, you know, if you are actually saving for a very critical goal and that goal, you are really thinking that you are lucky that you have realized that you have attained this much of gains and you would like to lock them, then by all means take it. But otherwise, I think if it is a really, really long-term money, corrections are very much a part of it. The only thing you have control on, yes, one kind of investor should actually take his money out and should not invest, and he should feel lucky that the market. If you are extremely pessimistic about our economy, if you are pessimistic about the country, if you think that, you know, this is completely a fluke and things will actually turn out to be very bad, that looks unlikely, because, you know, the equity investing is at the heart of it, is a general bet on economy. And when I say long-term, 3-year, 5-year kind of time frame, the future is likely to be brighter than today. That is the basic premise. If that premise and if you don't believe in that, by all means, you know, you are not suited for equity. अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से आशु दुग्गल। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, very good evening. Dhirenji, I need your advice. I've been investing around 8,500 in Motilal Oswal Nasdaq 100. Post the split, do you think so it is still doing good and should I keep on investing? Or I was just thinking that I invest only 50% of 8,500, that's somewhere around 4,000 to 5,000 in Motilal, and rest I can think of any other fund which may give me better returns. So overall it's just a performance of Motilal Oswal and suggesting that if am I thinking in the right direction to split and think of any other alternate fund which might give me better returns? Thank you very much. It's very difficult to guess which one will give better return, but I'm extremely optimistic about Nasdaq 100. Nasdaq 100 is dominantly technology, but it is not only technology. So I would say that, you know, don't try. You know, it's a good thing going for you. 40% of the investment, you know, your money is of Nasdaq 100 is in technology companies. It still has, you know, about 20% in consumer durables. Services are about 10%. Communication is 5-6%. So, you know, it's 40% technology. And I think that's a great story in the US. That is a great story about the Nasdaq 100. And it has done exceptionally well. If you look at, don't fiddle with this. You are onto a good plan. You are onto a great fund. And it has done exceptionally well as well. And it will also turn out to be, you know, far more resilient if we see that, you know, our markets might face correction. So this is a very meaningful diversification. दिल्ली से विनोद हमारे साथ है। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर, मेरा धीरेन्द्र से ये सवाल है कि आपको सुन के मेरी 32 साल एज है और अब मेरे पास एक टर्म प्लान भी है
हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप है और 1 स्मॉल कैप भी है। लेकिन इसी के साथ ना पहले से मेरी कुछ LIC में इन्वेस्टमेंट चल रही थी, जो 25 से 30 हजार रुपए उसमें देती थी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या LIC वाली पॉलिसी को मैं विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट करूँ तो कैसा फैसला है और इसको कैसे किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं प्लीज। का पॉलिसी अगर आपके पास यूलिप है या कोई एंडाउमेंट पॉलिसी है तो उसके रिटर्न की तुलना आप इससे कीजिए जो अभी तक आपने निवेश किया है, और मुझे लगता है कि फिर आपको मेरी सलाह की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये अपने आप में साबित कर देगा कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि इन LIC पॉलिसीज को देने के पहले आप जरा देख लें कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज सफिशिएंट है कि नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बताया कि है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म पॉलिसी जरूर ले लीजिएगा। अगर आपकी अभी पूंजी इतनी इकट्ठी नहीं हुई है जो कि आपके परिवार के लिए काफी हो, तो उतने का लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज लेने के बाद ही अपना ये और इस पैसे को जरूर आप निकाल दें। यहाँ पे कम रिटर्न मिलता है, और खासकर आपके जैसे आदमी को जो कि सीधा इतने खूबसूरती से अपना और डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना करके उसको बढ़ा रहा है, उसको अपना ये इंडाउमेंट प्लान और यूलिप नहीं कैरी करना चाहिए। Dhiren, what advice will you give to the investors regarding the sectors and stocks to benefit from a receding pandemic and the economic normalcy that we are seeing these days? For normal investor, it is very difficult to take a call on, which sector, which one, because, variety of things happen. For example, around, since pandemic, pharma sector has done very well, but pharma sector has done very well not because of pandemic. It has done well because of its own cyclicality. Pharma sector was struggling for a variety of reasons, and the pandemic coincided with a lot of Indian pharma companies they were able to wriggle themselves out of the FDI crisis they were facing. So it's very difficult. Diversify well, be in a good fund, or be in a good company. Be in high quality companies, because it's very important in good markets. In a roaring market like this, where a lot of good part of the market could be very expensive, every correction, every big decline in the market, in a market like this, which we are, it will see a decline and it will bounce back. And the poor quality companies, poor quality funds will actually not bounce back. That is the trick. So profit booking or continue with SIP? Continue with your SIP and make sure that you are in quality funds. जी धीरेन्द्र, एक सवाल और जो आता है बार बार, कई बार अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि NPS में निवेश करना कैसा रहेगा। आप पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अच्छा है, और टैक्स बचाने के लिहाज से और वैसे भी कैसा है, अभी आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, NPS की खूबसूरती ये है कि वो सबसे कम खर्चीला है, और अब NPS में, पहले NPS में अधिकतम पैसा आपका कम लग सकता था, अब 75% लग सकता है। तीसरा एक जो खास फायदा है NPS का, कि आप 1.5 लाख रुपए तक कहीं पे भी आप लगाते हैं और आपको टैक्स की छूट मिलती है, चाहे और उसमें प्रोविडेंट फंड और बहुत तरीके के खर्चे भी एलिजिबल है। एक 50,000 रुपए का साल का आपका ऐसा निवेश है NPS में, जिसमें केवल NPS में लगाने पे उस पर छूट मिलती है। तो अगर आपकी आमदनी 2 लाख, अगर आप अपनी आमदनी को घटाना चाहते हैं 2 लाख रुपए निवेश करके टैक्स देने के लिए, तो 50,000 रुपए NPS में लगाना काफी अच्छा है। और NPS का Tier 2, जिसमें कि आप सब एक आम म्यूचुअल फंड की तरह पैसा लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं बड़ी आजादी से, बिना किसी लॉक इन के, वो भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है छोटे निवेशकों के लिए। ऐसे जगह में जहां पे आपके लिए पैसा लगाना म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है, वहां पे NPS Tier 2 उन निवेशकों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और NPS की सिंप्लिसिटी, सिंपल ऑप्शन है चूज करने के लिए। जी धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Dhirendra. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi hails whopping 355 crore UPI transactions this August, says it's a matter of pride. Bank will have to play a pivotal role in achieving India's export target of $2 trillion by 2030, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Foreign investors pump in nearly 22,000 crore rupees in the Indian capital market so far in September. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.